हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं क्लास 4 मैथमेटिक्स बुक के बारे में। इस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो क्लास 4 में आप लोग कवर करते हैं। आइए बुक का नाम देखते हैं क्या है। न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स। इन दिस बुक वी हैव वार्म अप, मेंटल मैथ्स, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स, क्विक असेसमेंट एंड वर्कशीट्स। एंड द बुक इज़ रिटन बाय S.K. गुप्ता एंड अनुभूति गंगवाल। आइए इस बुक का कंटेंट क्या है पहले उस पर बात करते हैं, उसके बाद हम उसके चैप्टर्स की डिटेलिंग देखेंगे। वन बाय वन डिटेलिंग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इस बुक में कितने आप चैप्टर्स कवर करते हैं, मैथ्स का मेन बेस टॉपिक इसमें क्या है। डिटेलिंग देखने के बाद हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कंटेंट चेक करते हैं हम। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, आई थिंक सो। आइए स्टार्ट करते हैं द कंटेंट ऑफ दिस बुक। Chapter 1 is numeration. In this chapter, we have to learn 5 digits and 6 digits number, face value and place value, expand notation, comparing and ordering numbers, successor and predecessor, forming numbers using the given digits, round of numbers. And in the second chapter is Roman numerals. In this chapter, we will convert the Hindu Arabic numbers into the Roman numbers. And how can we convert this? So rules for the forming numeral numbers. Chapter 3rd is addition and subtraction. Addition of 4-digit numbers. Addition of 5 and 6-digit numbers. Properties of addition. Subtraction. Subtraction of 4-digit numbers. Subtraction of 5 and 6-digit numbers. Addition and subtraction together. Estimating sums and differences. Next, fourth chapter is multiplication, is about multiplication. So in this chapter we have to learn terms related to multiplication, properties of multiplication, multiplication table, multiplying by 10, 100 and 1000 and so on, multiplying by a multiple of 10, 100, 1000 and so on, multiplication by 1-digit multiplier, multiplication by 2-digit multiplier, multiplication by 3-digit multiplier, and estimated products. In the chapter 5, we have division. In this chapter, we have to learn about meaning of division, terms related to division, dividing by a 1-digit number, dividing by the 4-digit and 5-digit numbers, and the chapter 6 is factors and multiples. What about factor, properties of factors, finding factors, common factors, multiples, properties of multiples, even and odd numbers, common multiples, prime and composite numbers, sieve of Eratosthenes, prime factorization of a number, divisibility rule. And the chapter 7 in the fraction, we have fraction, numerator and denominator, fraction on the number line, like and unlike fraction, equivalent fractions, checking equivalent of fractions, comparing and ordering fraction, reducing a fraction of its lowest form, kinds of fraction, addition of like fraction, subtraction of like fraction. And in the chapter 8 we have decimal. In this chapter we will learn about decimal about tens position, hundreds, thousands, equivalent decimals, money and decimal. देन उसके बाद हम बात करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर, जो आपके एग्ज़ाम में टेस्ट पेपर आता है उसके रिलेटेड कि किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को पुट किया जाता है. देन चैप्टर 9 इज़ अबाउट मेजरमेंट्स अबाउट लेंथ, कन्वर्जन ऑफ मीट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, estimation of length, measuring of weight, kilogram and gram, conversion of metric units of weight, estimation of weight, measures of capacity, liter and milliliter, conversion of metric units of capacity, addition and subtraction of capacity, estimation of capacity. And the chapter 10 is time and calendar. In this chapter we will learn about clocks, telling the time, using AM and PM time, 24 hours time notation, conversion of time,
operation of measures of time, lapse time, calendar, and the chapter in this chapter 11, that is geometry. In this chapter we will learn about basic geometrical terms, types of lines, measuring a line segment, drawing a line segment, angle, naming an angle, interior and exterior of an angle, open and closed shapes, and the next chapter is chapter 12, that is अब अभी चैप्टर 11 के कुछ टर्म्स रह गए हैं, दैट इज पॉलीगन्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल, special triangles, special quadrilaterals, circle, drawing a circle, parts of circle, relation between the radius and diameter of a circle, interior and exterior of a circle. And the next chapter is chapter 12, that is about the perimeter and the area. So perimeter of a triangle, perimeter of a rectangle, perimeter of a square, area, finding area using the square tile, area of rectangle, area of a square, visualizing 3D shapes, that is solid, nets, viewing 3D shapes, pattern and symmetry, reflection like a mirror image, patterns in addition, patterns in multiplication, patterns in division, geometrical patterns based on the symmetry, and the chapter 10, that is the last chapter of this book, that is data handling, bar graph, and interpreting reading bar graph. And in the last we have the model test paper 2 and the answer sheet. So one by one हम इन सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे. सो फर्स्टली हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे, देन हम इसके एक्सरसाइज को कवर अप करेंगे. सो अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी बुक में अगर कोई भी क्वेरी है, आप हमारे चैनल पर शेयर कर सकते हैं उस क्वेरी को, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा. मैथ से रिलेटेड आप इस पर क्वेरी शेयर कर सकते हैं. आज हमने क्या समझा है? आज हमने क्लास 4 न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स की डिटेलिंग देखी है. इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हम कवर करेंगे क्लास 4 के लिए, आज हमने वो पढ़ा है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे चैप्टर 1 से. आज के लिए शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.